मातरम। हम देखेंगे एलिस इन द वंडरलैंड। स्टैंडर्ड फोर्थ है, लेसन हम फोर्थ कर रहे हैं, यूनिट 4 कर रहे हैं बच्चों। पहले हमने वाई पोएम फिनिश की, अब हम लेसन देखेंगे एलिस इन द वंडरलैंड। अभी हमने उसका टेक्स्ट बुक वर्जन फिनिश किया। रीड द गिवन पैसेज यू केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जहाँ 4 आपको लाइनें दी गई होगी, उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। वंस रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। आराम से वो अपनी बुक लिसनिंग टू हर सिस्टर्स रीडिंग अ स्टोरी। उनकी बहन पढ़ रहे थे और वो आराम से सुन रहे थे। सडनली शी सॉ वाइट रैबिट स्कैम्बलर बाय and he had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat and as he was hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." What was Alice doing? Alice was lying under a tree, listening to her sisters reading a story. A rabbit was wearing a blue coat. What did rabbit took out from his pocket? The rabbit took out a watch from his pocket. The rabbit took out a big watch from his waistcoat pocket. तो आपको ऐसे लिखना है, उन्होंने क्या निकाला आपको बताना है। The rabbit was in hurry. Yes. So he thought that there was somebody very different about the rabbit, she thought, and it could it could wore a red waistcoat and carried a watch. So Alice wondered and talking to a rabbit who was wearing a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. The white rabbit started running from here and there, followed the rabbit, and the rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. वो होल में दौड़ गए क्योंकि वो छोटे थे. Who is referred to as she is in the first line? She means Alice. हम Alice की बातें कर रहे हैं. What was something different about rabbit? Rabbit was different as he was talking. Rabbit और एक नवाब साहब की तरह उन्होंने वेस्ट कोट पहना था बच्चों. वाई डिड एलिस फॉलो द रैबिट? एलिस वॉज वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द रैबिट, सो ही फॉलोड द रैबिट. नेक्स्ट है, द रैबिट वॉज रनिंग बिकॉज ही वॉज इन अ हरी. द रैबिट वेंट इन टू द लार्ज rabbit's hole, right? Why did Alice jump into the rabbit's hole? क्योंकि Alice jumped into the rabbit's hole to follow the rabbit. Where did the rabbit go? The rabbit went very down in the rabbit's hole. Where was Alice falling? Alice was falling miles down inside the rabbit's hole. Where? Somewhere near the center of the earth. तो बच्चों वो रैबिट के होल पे वहाँ चले गए. What did rabbit wonder? Alice wondered that how would you slip through outer side of the earth? अर्थ के इस तरफ से कैसे आप स्लिप होके गिर सकते हो. The rabbit thought that she was going near the center of the earth. तो फिर उन्होंने राइट बोला, राइट, तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ जाके गिरे. Alice landed in a pile of dry leaves. Where? और पूरे जहाँ हरी पत्ते थे सूखे वहाँ जाके गिरे. Whom did she see again? तो वापस रैबिट दिखा उनको. Alice disappeared again. Wrong. Alice तो वहीं पे थी. 55 एज 54 हो गया, अभी हम 56 पे हैं. What did Alice see? Alice saw a small door about 15 inches high.
quickly, suddenly, right? Three such words, really, angry. और ये है who saw a jump table with a golden eye on it. तो Alice saw a glass table with a golden eye. फिर what did she do? तो किसने क्या किया? विद द गोल्डन की क्या किया उन्होंने ओपन किया. गोल्डन की मिले तो क्या छोड़ेगा क्या कोई? तो उन्होंने देखा कि क्या है वहाँ पे. ठीक है. फिर वाई वॉज शी डिलाइटेड बिकॉज द गोल्डन की एंड शी फिटेड इट इन द लॉक. द वर्ड लॉन्ग्ड मीन्स wished. She entered into the lovely garden. Wrong. While listening to the story, what did Alice see? While listening to the story, Alice was a white rabbit while she was reading to the story. फिर है the rabbit had dash eyes, pink eyes. Understood? तो उनको कैसी आईज थी? पिंक आईज. फिर नेक्स्ट इज फोर्थ. What is the difference between page number 57? About the rabbit and the Alice saw. तो एलिस ने जो देखा वो और कितना डिफरेंट था बच्चों, ये आपको बतलाना है. तो द रैबिट एंड द एलिस वॉज सो डिफरेंट दैट इट कुड talk to and was worn a red waistcoat and had a watch. तो इन्होंने ये चीज़ पहनी थी. Alice wandered to see the rabbit. See, that is talking. क्या देखा कि वो बातें कर रहा है. Who was burning and curiosity? A. Alice. Alice found that it was White Rabbit. The rabbit started dash. B. Running. Who suddenly popped out a large rabbit hole. So suddenly popped down a large rabbit hole. The rabbit. Where did the rabbit go? The rabbit jumped into the big rabbit hole. Okay. And went down. And who fell down? And down. तो नीचे जाते गए. Who fell down? Down. See, rabbit. कौन गिरा नीचे? रैबिट. फिर वेयर एम आई? हाउ मेनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन? हु said these words? Alice spoken these words when she jumped into the rabbit's hole and fell miles down. When did Alice see the white rabbit again? When Alice landed on the piles of dry leaves and looked around quickly, she suddenly saw the white rabbit again. Oh yes, oh my ears and whiskers, how late it is. It's getting a the rabbit. Rabbit ऐसे बोले तो whiskers उनकी जो है और ears और वो मुझे लेट हो रहा है. Alice saw a small door about 18 inches high. The door is big and Alice was going through the wrong. The Alice could not even get the head through क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था और एलिस बहुत बड़ी थी. थ्रू द डोर. तो राइट है. ओके. फिर नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो चैप्टर 4 हम कर रहे हैं बच्चों. एलिस इन द वंडरलैंड 58 पेज और NCERT स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश.
Alice found the golden key on the sea glass. Alice couldn't open the door with the help of the key wrong. उन्होंने open कर लिया था. How did Alice reach the wonderland? तो Alice saw a walking or rabbit. She became curious and followed the rabbit. The rabbit went into the rabbit's hole and Alice was jumping into the rabbit's hole. Following the rabbit, he reached the wonderland. What strange things did Alice see? So Alice saw a lovely garden with beads of bright flowers and cool fountains. Before that, she saw a very small door and glass table on which a golden key was lying. तो ये चीज़ आपको बतानी है कि वहाँ पे ब्राइट फ्लावर्स थे, फाउंटेन्स थे हमने डिस्कस कर लिया. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. इट वाज ब्यूटिफुल गार्डन फ्रॉम द doorway. It filled with different colors of flowers and there was also cool fountain inside and sprinkle the fresh cool water. बहुत ज़्यादा ठंडा और स्प्रिंकल पानी था वहाँ पे फ्रेश. तो और फूल आ रहे थे, है ना. व्हाट डिड 23rd हो गया. व्हाट डिड एलिस विश एंड व्हाई एलिस विश टू बिकम स्मॉलर सो दैट इट कैन गो टू द लवलीस्ट गार्डन थ्रू अ स्मॉल doorway. Describe some of the sounds to hear at night. Barking of the street dogs and the night watchmen's whistle are heard. They sometimes are mortifying. Imagine that you are Alice and your partner is a rabbit. What would you do? So if you are Alice and my partner is a rabbit, I would actually exactly do what Alice did, and therefore I would follow my partner to the wonderful land. What do you think Alice saw in the garden? Alice saw beds of bright flowers and cool fountains and beautiful birds and fruits, and she also felt the presence of fragrance of beautiful flowers. तो बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे बच्चों वहाँ पे और खुशबूदार फ्लावर्स थे. तो वो उनको बहुत अच्छा लगा जो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया. हाउ वुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन. कैसे वो जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे थे और दरवाज़ा काफ़ी छोटा था. इफ़ एलिस वुड बी स्मॉलर, अगर वो छोटे होते तो वो चले जाते रैबिट की तरह. तो शी वुड हैव गॉन इनटू द गार्डन. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. दैट मीन्स आई वॉकड फास्ट, hurried, to think, wonder, happy, delighted. To be seen nowhere means disappear. At once, quickly. It is inquisitive means curious. Move fast, scamper. Move fast means scamper. है ना. जो जल्दी चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कैम्पर. जल्दी वॉक करते हरिड, वो हरिड टू द स्कूल. Happy means delighted. At once means quickly. To think, wonder. To be seen nowhere means disappear. Give another word for ones given below with similar meanings and make sentences. That is another word sentence. Lovely means beautiful. I have a beautiful pocket. Talking, chatting. My brother is chatting with his friend. Listening, hearing. On hearing the loud voice, I woke up. See, the teacher said to the students to look at the blackboard. इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, न्यू सेशन में, यूनिट 5 में. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोएम. Bye for now. Take care. Happy learning.